Hello friends, all of you are welcome on a very own platform Learn Neat IIT JEE with Babita. So today I'm here to complete the breathing and exchange of gases. So it's gonna be our fourth part and the last part as well. So it's gonna be a bit longer than the other ones. Last time we had some network problems, so I had to make a shorter part, but don't worry, today we are gonna finish this. But before that, I would like to say you that the ones who've not watched part 1, 2 and 3, please go and watch them. It would be better for you to understand part 4 if you are done with first 3 parts. So without wasting time, let's start. Before that, I would like to say the same request. Please do like, share and subscribe. Thanks. अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पार्ट 4. So let's proceed. So friends, last time we were done with the properties of alveoli. This time I'm here with a special fluid which is released by type 2 alveolar cells. So that fluid is known as surfactant. So it reduces surface tension. What does it do? It reduces surface tension. This SURFE, it's surface, and it prevents alveoli from collapsing. So it does two things. First, it reduces the surface tension. Secondly, it prevents alveoli from collapsing, पिचकने से बचाता है. What else prevents alveoli from collapsing? Residual volume, जो हम स्पायरोग्राम में करेंगे, not few minutes ahead. So related to this surfactant, we have a disorder that is known as respiratory, which suggests that the name is the disease is related to respiratory system. We are learning about breathing, so all the diseases are related to respiratory system. So it is respiratory distress syndrome. This is also known as, here it's ACA is also known as breathing disorder of premature newborn. Breathing disorder of premature newborn. Guys, do you know what is premature newborn? Have ever heard of any child who is born in the starting of the 7th month of gestation period? Gestation period means pregnancy. The time period in which baby lives in a mother's womb. But you know, in the premature newborn is a baby which is born before 9 months. Generally, children are born at the end of the 9th month of pregnancy. But here the boy or means the child is born in the 7th month of the pregnancy, 7th month of the gestation period. So you know, this surfactant in the body of, in the lungs of a child begins to be released at the end of the 7th month. So the surfactant begins to be released at the end of the 7th month of gestation period. So during the gestation period, when it is the 7th month, the surfactant begins to release at the end of the 7th month. And this baby, the premature newborn, is born at the starting of, it's not Punjab National Bank, it's premature newborn. It is born
at the start of the 7th month. So when it is born at the start of the 7th month, it will have no surfactant in its lungs. No surfactant in its lungs. So when it will have no surfactant in its lungs, so surface tension will increase and alveoli, chances of collapsing of alveoli increase. So chances of collapsing of alveoli increase. But then it is like the child may survive as well. It's not like a child who's born at the start of the 7th month will not survive. But there are rare chances of the survival of such child. Sometimes things happen unexpectedly, or the surfactant begins to be released earlier. In that only one case the child is to be survived. Even the child who's born at the start of the 7th month, he's not completely that mature that it should be. So the premature newborn may survive from respiratory distress syndrome. Okay, so this is due to the surfactant. This was the one thing I had to miss due to network problem in the last class, which was related to alveoli. But here, as a recap, just take it as a recap or as a start to this lesson. So now we are here with the physiology of respiratory system. So guys, do you know what physiology literally means? Is the study of functioning of a body or an object or something. So physiology of respiratory system refers to just knowing about the process of inhalation and exhalation. Inhalation or exhalation, I mean. Then, do you guys know that there are 2 types of inhalations and 2 types of exhalations? The first one of them is the one which we do naturally, whereas the second one of them is the one we do as forced breathing, or forced exhalation, or forced inhalation. So this forced inhalation or forced exhalation can be explained by Boyle's law. See, we've laws in biology as well. So this Boyle's law is depicted by a diagram. Let me draw it for you. So according to the Boyle's law, we take a jar. It has some gas particles in it. So here we have a piston. When the piston is upwards, it is more space for the gas particles to just roam around freely. Here the pressure gauge shows 1. This is the pressure gauge. Before doing the experiment, we are supposed to make sure the pressure gauge is put at an equal height in both the jars. We take another jar with the piston very deeply. The same number of gas particles, gas molecules should be there. So just see if you can, the gas particles are very near to each other and the pressure gauge shows 2, right? So here it just depicts the Boyle's law. It says that pressure is inversely proportional to volume. The Boyle's law says this thing, that pressure is inversely proportional to volume. So according to Boyle's law, I think you found out what I wanna say. That when the alveoli relax, it has more space. So it is the place for more particles to come in and we inhale. But when the alveoli or when our lungs contract, it's less place for the air to be. So it has to go out, having no other option.
So this is the process of the physiology of respiratory system. So now let's learn about them one by one. Having a normal quiet inhalation, which is the breathing, the inhalation we do without any effort. Then we have normal quiet exhalation, the exhalation we do without any effort. And the one, just listen carefully. Did you hear me breathing? Right? So the first one I took inside, the first breath I took inside was inhalation. The next one I just forced out outside was exhalation. It produced sound. But that's the not thing to pay importance to. The thing that needs to be paid importance on is the effort we need to take in air and to expel it out. So when we need to make an effort to take in air, we call it as forced inhalation. And when we need to make an effort to force out air, it is called as forced exhalation. So this was all about forced inhalation and forced exhalation. Now let's learn about it one by one. So come. Guys, you should be knowing that nothing in our body takes place without our will. And to make something take place, our muscles need to contract or expand or move. So the muscles which are needed in normal quiet inhalation are the diaphragm muscles. Diaphragm muscles refer to the phrenic muscles, the muscles present in the diaphragm, which are called as phrenic muscles, and external intercostal muscles. These are the muscles, intercostal muscles. These are the muscles which are present on the outer side of our ribs. So these both muscles contract to make us inhale. So this is all about the normal quiet inhalation. After normal quiet inhalation, we have the normal quiet exhalation. So having it in normal quiet exhalation, we have again the same two muscles. Don't think that these have been ended in such a short manner. We have a long process with each step included, but for that you will have to learn the basic processor, the basic needs for inhalation and exhalation normally. And we have external intercostal muscles, the same muscles which were there in the normal quiet inhalation, but this time they'll not contract, they'll relax. So the time they contracted, there was more space in the alveolar membrane, and there was a way for the air to come in. But when they relax, they come to their own positions, then they'll have to, the alveoli will have to shrink a little, and the air present in an alveoli or present in a lungs will go out. It happens in a very, step-by-step manner. I'll be telling you. First, I'll telling you by diagram inhalation and exhalation. तो फ्रेंड्स, ये फिजियोलॉजी डायग्रामेटिक फिजियोलॉजी होगी नॉर्मल क्वाइट इनहेलेशन एंड नॉर्मल क्वाइट एक्सहेलेशन की. तो जैसा कि वी आर एबल टू सी, जो बाहर एनवायरनमेंट में जो प्रेशर होता है, एयर प्रेशर होता है, दैट इज 760 mmHg. 1 atmosphere is equals to 760 mmHg, right? And the pressure inside our lungs is 750 mmHg. So अगर इधर प्रेशर कम होगा और इधर प्रेशर ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन कैसे होता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. So air outside will start to flow inside our lungs through our nostrils, through a very unique passage. That's right, but that will continue flowing inside. So the external to let in air, to give space to air, the external intercostal muscles will contract, and so will the phrenic muscles.
अगर ये contract होंगी then they'll come outside, they'll bulge outside. So it will become flat like this. The ribs will come outside and the whole air will flow inside. The whole process will take in 2 seconds. Then comes the inhalation. And inhalation is done, then comes the exhalation. So as usual, the pressure outside is 1 atm or 760 mmHg. The one inside the lungs is 744 mmHg due to the inflow of the air from outside. Then the phrenic muscles and the external intercostal muscles will relax. They'll go to their original position. So diaphragm will move like this, dome-shaped structure. And even the external intercostal muscles will move inside. So the lungs will have less space left. Air will flow again from higher pressure to lower pressure. So from 764 mmHg it will flow to 760 mmHg. The whole process will take 3 seconds. So this is the diagrammatic process of inhalation and exhalation. Now let's come to the theory part of inhalation and exhalation. So the process of inhalation is gonna be somewhat like this. First step, so it will have the contraction of phrenic muscles, the muscles of the diaphragm, and the external intercostal muscles. So the contraction of phrenic muscles and the external intercostal muscles would be there. This causes, the contraction causes increase in the volume of thoracic cavity, increase in volume of thoracic cavity. Then the increase in volume will result in the decrease of intrapulmonary pressure, means within the lungs, the pressure within the lungs. As I showed you, it had become 754 mmHg, right? It was less than the outside pressure. So it is the result in the decrease of the intrapulmonary pressure. Then after the decrease in the intrapulmonary pressure, what will happen is air will flow because increased volume is inversely proportional to pressure. As volume will increase, pressure will decrease, right? So due to decrease in pressure, air flow from outside. Higher pressure to inside, that is lower pressure. So air moves into the lungs. Movement of air into the lungs, right? So the pressure, the process of inhalation is an active process. Do you know what is active process? Active process is the one from a higher energy level or higher pressure to the lower one. So it is an active process for 2 seconds. In the cell and cell cycle and cell division of biology, you might not cell cycle, cell, the unit of life of biology, you might have learnt about active process and passive process, right? In exhalation, instead of contracting the phrenic muscles and external intercostal muscles, phrenic muscles plus external intercostal muscles, both of them relax. So in exhalation, normal quiet exhalation, phrenic and external intercostal muscles relax.
Then the cost decrease, the relaxation of the two muscles, it causes decrease in the volume of the thoracic cavity. As you know, volume is inversely proportional to pressure. So as soon as the volume decreases, the pressure will increase. So increase in intrapulmonary pressure. Then the pressure outside is lower than the intrapulmonary pressure. So air moves out of the lungs. This is all about the normal quiet exhalation. So the normal quiet breathing, normal quiet breathing is none other than the normal quiet inhalation plus normal quiet exhalation. So it is the normal quiet inhalation plus the normal quiet exhalation, right? So the normal quiet breathing means the normal quiet inhalation and the normal quiet exhalation is called as abdominal breathing. It is known as the abdominal breathing because the abdominal muscles take part in normal quiet breathing. Just keep on breathing once. Just do not make it forced breathing. Breathe normally and pay attention to the muscles of your stomach. You'll see a change in those muscles. That is because as we breathe air in, we have air coming inside. So our lungs need to expand to let in air, more and more air. For that, ribs move and so does the diaphragm. So to give space to the diaphragm or digestive system, like intestines and stomachs, they move forward, they bulge out, so that they give way to the diaphragm. That's why the normal quiet breathing is called as abdominal breathing. After normal quiet breathing, we have forced breathing. It's not that important from a NEET point of view or from subjective exam point of view, but there are three very important muscles which are known as the accessory muscles of inhalation. So the forced breathing is thoracic breathing. Forced breathing, the normal quiet breathing is abdominal breathing, and the forced breathing is thoracic breathing. This is so because some accessory muscles of thoracic cavity, some accessory muscles of thoracic cavity help in the forced breathing. So the some accessory muscles of thoracic cavity help in the forced breathing. So it is known as the thoracic breathing. So the accessory muscles for forced breathing are, so the names of the accessory muscles: there are three accessory muscles with the functions they do. So the first one is sternocleidomastoid muscles. It's a big name, right? The biggest one I've seen till now in class 11th. So it's sternocleidomastoid muscles.
but you need to get a habitual to such kinds of big names, because till you are done with MBBS and till you have the white coat on your body, you'll have to go through several and several of such names. So what do sternocleidomastoid muscles do? They elevate the sternum. Do you know what's elevate? Change position. थोड़ा ऊपर उठाना और थोड़ा नीचे भेजना. That's elevation, right? So sternum, as it refers to, it says sternum. Then we have scalene muscles. These are not the muscles which are like scalene triangle, no. These are the ones which elevate the first two ribs. It's first, it's two. Difference between both. So the scalene muscles elevate the first two ribs. Then we have pectoralis minor muscles. Pectoralis minor muscles. These elevate third to fifth ribs. So the rib 1 and the rib 2 are elevated by the scalene muscles, and the rib 3, rib 4 and rib 5 are elevated by the pectoralis minor muscles. So these three muscles only function during forced breathing, forced inhalation or forced exhalation. So now let's proceed to the lung volumes and lung capacities. So for the measurement of lung volumes and lung capacities, for their measurement, a device is used. The device is called a spirometer. So what is the device called? Spirometer. Then we have the record. Everything that can be measured must have a record. So that record is called a spirogram. When we are done with all the lung volumes and lung capacities, I'll show you a spirogram. So first of all, the first volume we have is the tidal volume, which is 500 ml in measurement. It is the volume of air inspired or expired during normal breathing. So, you know, its value is approximately 500 ml. Then we have the inspiratory reserve volume. It is the additional volume of air except for the tidal volume of inhalation. It is the extra volume of air which a person can inhale during a forced inspiration. Then we have expiratory reserve volume. It is the additional volume of air which a person can exhale by forceful expiration. The first inspiratory reserve volume is 2500 to 3000 ml, and expiratory reserve volume is 1000 to 1100 ml. Then we have the residual volume. Residual volume is the volume of air which remains in our lungs even after we have forcefully expired all the air. Means I told you during the surfactant wala case that it prevents, and the residual volume prevents alveoli from collapsing. So this residual volume is that volume which even after forceful exhalation is left behind in the alveoli to perform the function of prevention of alveoli from collapsing. So with respiratory capacities, it are not more than combinations of different respiratory volumes. So first of all, we have inspiratory capacity, that is the tidal volume, plus inspiratory reserve volume. It is 3000 to 3500 ml. Then we have the expiratory capacity, which is the tidal volume plus expiratory reserve volume. It is around 1500 to 1600 ml. It's 16. Okay. Then we have the functional residual volume. It is expiratory reserve volume plus residual volume. It is around 2100 ml to 2300 ml.
Then we have the vital capacity. It is inspiratory capacity plus expiratory reserve volume. Or we can say that tidal volume plus inspiratory reserve volume plus expiratory reserve volume. So it is 4000 to 4600 ml. What we have then is the total lung capacity. It is the sum of all the volumes, as we have total in it. Residual volume plus inspiratory reserve volume plus expiratory reserve volume, plus we have tidal volume. Then the sum, it is around 5100 to 5800 ml. So this is all about lung capacities or pulmonary capacities or respiratory capacities. Now let's have some advanced volumes. So first of all, we have minute ventilation, which is tidal volume is not the sum but it's the product. Tidal volume into respiratory rate. So the respiratory rate of human beings is 12 when the tidal volume is 500 ml. So it is 6000 ml. The minute ventilation is we breathe in 6,000 in and out 6000 ml of air, 6 liters of air in 1 minute. Secondly, we have the alveolar ventilation. So the alveolar ventilation is the breathing rate into, it is also a product, not a sum. So it is the breathing rate, into the actual volume. See friends, I've got a habit of drawing product this way, so please understand. So it is the actual volume of air participating in gaseous exchange, means inlet and outlet of gases participating in gaseous exchange. So it's 350 ml and the breathing rate is 12, right? So we have 4200 ml of air, which is known as alveolar ventilation. So for you here, I've come up with a spirogram. This is a spirogram. So we have residual volume, expiratory reserve volume, tidal volume, and inspiratory reserve volume. This is a spirogram here. Residual volume plus expiratory reserve volume is the functional residual capacity. Then we have tidal volume and inspiratory reserve volume, inspiratory capacity, expiratory reserve volume and tidal volume, expiratory capacity. Then we have inspiratory reserve volume, tidal volume, and expiratory reserve volume, which is the vital capacity. And the total of all means inspiratory reserve volume plus expiratory reserve volume plus tidal volume plus residual volume, that is total lung capacity. So this is all about the volumes and capacities, pulmonary volumes and pulmonary capacities in one shot. The spirogram is the depiction, as I told you at the very start. This is shows, it is an easy way to remember all the volumes and capacities. Now what we have here is the exchange of O2 and CO2. So the percentage of O2 in inhaled air is 21%. In alveolar air is 13.6%, and in exhaled air it is 16%. Then the percentage of CO2 in inhaled air is 0.04%. In alveolar air it is 5.2%, and in exhaled air it's 4.5%. See, still in exhaled air the O2 percentage is more than that of the percentage of CO2, but still we consider it as expirating CO2 because the necessity to expel out air is to exhale CO2, not to exhale O2. So O2 doesn't get much attention, or no, it gets a really little attention
and exhaled air, whereas in inhaled air it gets quite good attention. Now that we have Dalton's law, so friends, do you remember we did Boyle's law a little while ago? Now we are doing Dalton's law. So Dalton's law says that each gas in a mixture of gases exerts its own pressure. Each gas in a mixture of gases exerts its own pressure. We have a mixture of gases. In that mixture of gases, each gas exerts its own pressure. The specific gas pressure means the pressure of the specific gas is known as partial pressure in that mixture of gases. Partial pressure. It is depicted by P and the symbol of that gas. So first of all we have atmospheric pressure, that is 760 mmHg. I'm going to depict you, give you a short depiction of this. So it is 760 mmHg. So it would be the sum of the partial pressures of all gases. So we have PN2 plus PO2 plus PAR plus PH2 plus PCO2 plus P other gases. These are all of the gases present in our atmospheric gases. So the partial pressure of all the gases completely comprises the atmospheric pressure. So guys, just take a look. Is this diagram visible to you? The complete one? Just see. It is a diagram which depicts the transportation of gases. So first of all we have our alveoli, a big alveoli, right? So partial pressure of oxygen is 159 mmHg and that of CO2 is 0.3 mmHg. Due to the residual volume present in our lungs, so in our conducting zone में in our alveoli alveoli में जो ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होती है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होता है और O2 का ज़्यादा होता है. अब इधर जो हमारी एल्वियोलाई होती है इसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होता है 104 और CO2 होता है 440. देन यहाँ से एक्सचेंज होकर ये जाता है हमारी ब्लड वेसल्स में. ब्लड वेसल्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है 45 और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होता है 40. अभी यहाँ से हमारी जाता है एओर्टा में और बाकी आर्टरीज में बाद में. सो लंग्स ने यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड डाल दिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा. अब यहाँ पर जो PO2 है मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो यहाँ पर 95 हो गया और जो इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो 40 हो गया. अभी इधर से जो 95 पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है और 40 पार्शियल प्रेशर CO2 का है ये हमारे इधर लंग्स में सेल्स में जाएगा थ्रू आर्टरीज एंड कैपिलरीज आर्टरियोल्स. तो यहाँ पर जो हमारी बॉडी सेल्स हैं उनमें हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हो जाएगा 40 और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा 45 हियर. देन इट गोज टू द फ्रॉम कैपिलरीज टू वेन्यूल्स टू वीन्स टू वेना कावा. तो वेना कावा में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 would be 40 and that of CO2 would be 45 and then it will go out. The CO2 will go from 45 to 40 due to active transport and then it will go out. This is the whole mechanism of transport of O2 and CO2 from outside to inside our body and all throughout our body. So guys, now I have for you the structure of hemoglobin. I've already written down the slide in order to save your time. To make down these diagrams is a long job, so it would consume a lot of time, so I've written it already. So the structure of hemoglobin has we'll learn it in 3 parts. 2 parts in adult hemoglobin and a part in fetal hemoglobin.
So in adults, hemoglobin, two types is present. I do not write the long hemoglobin. I just to write the words HP in order to save my time and hard work. I'm very lazy, So having it as HbA1, we have 2 alpha chains and 2 beta chains. In HbA2, we have 2 alpha chains and 2 delta chains. As you will please notice, you will find 2 alpha chains in each and every hemoglobin, whereas the beta, delta and gamma will keep on changing from one hemoglobin to another. So hemoglobin A1 is present 98% and hemoglobin A2 is present just 2%. Such a small amount. A2 2%. Now we have fetal hemoglobin, which is present in the fetus only. So it contains 2 alpha chains and 2 gamma chains. The A1 contains beta chains, the A2 contains delta chains, but fetal hemoglobin contains gamma chains. So it has been a PYQ. So you need to pay attention to it. The fetal hemoglobin has more affinity towards O2 in comparison to adult hemoglobin. We have had this question not once or twice but many times in the past exams. So the fetal hemoglobin has more affinity towards O2 in comparison to the adult hemoglobin. We'll soon know the reason behind this. Now hemoglobin, let's learn about the structure of hemoglobin except for this alpha, beta, delta, gamma. Hemoglobin is made up of 2 parts, heme and globin. The heme is the iron containing part, whereas the globin is the protein part. The protein is not some monomeric or polymeric, but it's multimeric protein, not just monomeric, not just polymeric. It's multimeric protein, means having a number of strands, monomers. So this is the structure of Hb. Isn't it quite good? It is, obviously. So it is, we have Fe plus 2 4 times. This is a complete hemoglobin structure. It has a globin chain. It is the globin chain is a chain of amino acids. As it is the protein part, so it needs to be a chain of amino acids. So it has 4 Fe plus 2 ions. The oxygen comes and combines with the 4 O2 with the 4 Fe plus 2 ions. Each oxygen with each Fe plus 2 ion means one hemoglobin has 4 Fe plus 2 ions, so 4 oxygen molecules will bind to a healthy hemoglobin, isn't it? So as we are done with the oxygen, let's proceed towards carbon dioxide. So carbon dioxide, where we seeing oxyhemoglobin, we find carbon dioxide as carboxyhemoglobin. But actually carbon dioxide is amino hemoglobin. Carboxyhemoglobin is that of carbon monoxide along with hemoglobin. That is called as carboxyhemoglobin. So this has also been a PYQ, a confusing one. You need to pay attention to this one as well. Then we have Fe plus 2 ions. So at the end of each Fe plus 2 ions, we have NH2. And each carbon dioxide attaches to the NH2. And as soon as the carbon dioxide gets attached to the NH2, the oxygen gets released from the O2, the Fe plus 2 ion. So the exchange of O2 and CO2 in systemic capillaries is going to be somewhat like this. So this is RBC, the one in pink. RBCs are red, I know, but I didn't have a red highlighter, so I used the pink one. Red and pink are nearly equal. For girls, they are nearly equal. So we have partial pressure of CO2 40 and the partial pressure of O2 95 in this capillary, systemic capillary. And outside, the partial pressure of O2 is 40 and that of CO2 is 45. So let's come into the RBC. One hemoglobin is there inside this RBC, just consider. So as soon as the
O2 came and joined this ABC, the CO2 got released again. So water is present in in a body in a large amount, and so is in a blood, though it is present in a very large amount, 95%, right? So from blood it will flow into the RBC, water. When water will flow into the RBC, or the size is gonna be increased, it's gonna swell, right? The way the Kishmиш does, right? It isn't. So water will react with the CO2. Carbonic anhydrase will be the enzyme to, catalyze the reaction, and it will form H2CO3. Again, carbonic anhydrase will help it in breaking down into H plus ions and carbonate ions. The carbonate ions will go outside and the Cl will come inside. So as soon as Cl will come inside, the O2 will again come and bind here. So this is the exchange of CO2 and O2 in the systemic capillaries. The exchange of O2 and CO2 in a lungs, between a lungs and capillaries in a tubular aorta, that is called as the external respiration, though it also takes place inside the body. I've told this in my previous video. You need to go back and see that if you want to. And then inside these blood capillaries, systemic capillaries, it is going to be the internal respiration. So that is all about exchange of O2 and CO2 in systemic capillaries. I've told you about O2, I've told you about CO2 binding to hemoglobin and getting dissociated. And here I'm telling about I've been told about the exchange, right? So let's proceed. So the gas exchange is going to be two types. One is going to be pulmonary, that is the external respiration. The one taking in between the lungs and systemic capillaries. And then we have the systemic, which is the internal respiration. I do prefer short forms over whole words because I'm lazy enough to write down whole big words. This exchange depends upon four factors. So the four factors on which the gaseous exchange depends on. So the gaseous exchange depends on the following factors. First of all, we have the partial pressure of oxygen. So when the partial pressure of oxygen decreases when we go to the higher altitudes. So at higher altitudes, partial pressure of O2 decreases. For example, partial pressure of O2, let me tell you at different altitudes. So first of all, we have at sea level. At sea level, it's 159 mmHg. At 10,000 feet above sea level, it is 110 mmHg. So partial pressure of O2 decreases as we go higher. And at 20,000 feet above sea level, it is 73 mmHg approx. So these are the different partial pressures of oxygen at different altitudes. So at higher altitudes, the partial atmospheric pressure decreases. So what happens is it leads to altitude sickness. Ever gone to the mountains? You'll find that at going to the higher altitudes, सबसे high altitudes पे, your nose gets on bleeding. If you've not visited any mountain, you might have seen in the movies that at higher altitudes our nose starts bleeding and we start vomiting. The hero when goes to the highest altitude. I'm a big movie fan, so I always give examples from the movies. So just see, at
a higher altitude. At a very high altitude, hero keeps on climbing the mountain very till the top. And when he goes to the higher altitude, he feels vomiting, dizziness. He has other symptoms like nausea and लंबी लंबी सांसें लेता है. He feels tired. कई बार तो गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं and all. So let me write down the symptoms one by one. First of all is the nausea. The second one is vomiting. The third one is dizziness, शक्कर आना. Vomiting और nausea तो सभी जानते हैं, right? And then it is fatigue or tiredness, थकान होना. The next one is shortness of breath, लंबे लंबे सांसें आना, छोटी सी सांसें, काम न चलना and all. Next is insomnia. Insomnia. ये क्या होता है? It is the first word. When my teacher told me first time, I was shocked, like such a word, very strange kind of word. I had never heard it in my life. So actually insomnia क्या होता है? Like we are unable to sleep. We want to sleep. We are feeling sleepy. We are tired. We are exactly weird, but we can't sleep. The problem is that we have lack of oxygen, so it becomes difficult for us to sleep. In our class 11th book, the one who had gone to hills of in a hornbill book, जो हमारी क्लास 11 की हॉर्नबिल की बुक है, उसमें एक सिल्क रोड नाम का चैप्टर. यू रेड दैट, आई होप. इफ यू नॉट read that, just go and read that. You'll find that the tourist who had gone to who had stayed in a hotel was feeling very difficult to sleep. As he was laying down, he was feeling very tired. His chest was just completely blocked. As soon as he stood up, he sat down. He felt quite okayish. So this is a problem at altitudes. This is called as insomnia. They've not written that word there, insomnia. But if you have not read that chapter till now and you are going to read it later on, it's a golden opportunity for you to be a scientific buddy. You are being a doctor, so you should know all the problems. So when your teacher teaches you, take the golden opportunity and tell it. Insomnia, remember it, don't forget. I've given you a straight way, an opportunity to make your teacher very impressed about your scientific knowledge, about your medical knowledge. So this is the insomnia. So here we are on a second factor, that is the surface area for gaseous exchange. The surface area for gaseous exchange. What does this mean basically? So the surface area for the gaseous exchange refers to, अगर हमारी alveoli बहुत छोटी होगी, surface area कम होगा, nearly normal surface area is around of alveoli, it is 70 meters square to 80 meters square. अगर इससे कम होगा तो gaseous exchange कम होगी, अगर इससे ज़्यादा होगा तो गैस और ज़्यादा exchange होगी. So except for the partial pressure, the surface area of the alveoli or of the exchange area also needs to be increased to increase the gaseous exchange. Thirdly, we have the diffusion distance. इसे कुछ ऐसे देखो, एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन नहीं आता, आपका फ्रेंड आपसे बहुत दूर बैठा है और आपको करनी है चीटिंग. आप क्या करेंगे? आप कुछ ना कुछ करके करने की चीटिंग कोशिश करेंगे. अब ज़रा सोचो, आपका फ्रेंड आपके बहुत पास बैठा होता, आप अच्छे से चीटिंग कर लेते. थोड़ा मीडियम डिस्टेंस पे बैठा होता तो थोड़ी सी परेशानी के साथ चीटिंग कर लेते. अब बहुत दूरी पे बैठे हैं, अब तो बहुत सारी परेशानी करनी पड़ेगी चीटिंग करने के लिए. बीच वाले को रिश्वत देनी पड़ेगी, भाई तू उससे पूछ के मुझे बता, और बहुत मुश्किल से करना पड़ेगा. ऑल्दो आई हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ चीटिंग दिस वे, but doesn't matter. I've been showing my question paper to several people, even in the board examinations. It's been a very a nice experience of showing people my answer sheets and all.
सो तो कहाँ से चले गए हम, लेट्स गेट ऑन द टॉपिक, जोक्स अपार्ट। तो डिफ्यूजन डिस्टेंस जो होगा, तो भाई ये फ्रेंड वाली बात है। अगर हमारी एल्वियोलाई है जो हमारा कंडक्टिंग जोन है, और जो हमारी गैशियस लेके जाने के लिए जो एओर्टा है या फिर जो भी कैपिलरी है, वो हमारी एल्वियोलाई से बहुत दूर है, उसके बीच में बहुत सारे लेयर्स हैं और ऑल। लाइक आपके दो दोस्तों के बीच में टीचर खड़ा है, दो रोजोर हैं, दो बच्चे उन लाइन्स में बैठे हैं, कितनी परेशानी होगी ना पूछने में। किसी का सर बीच में आ जाएगा, देख नहीं पाएंगे, कोई किसी से डर लगेगा कहीं वो टीचर से ना बता दे एंड ऑल। इशारे करके पूछने में भी प्रॉब्लम होती है जब बच्चे बीच में बैठे होते हैं ना। तो यही होता है डिफ्यूजन डिस्टेंस जब होता है, तो जब बहुत सारे लेयर्स होते हैं तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब एक लेयर होता है जो हमारी एल्वियोलाई होती है, उसकी वेरी थिन मेम्ब्रेन, दैट इज अ वेरी थिन मेम्ब्रेन which is used to facilitate gaseous exchange। अब सोचो आपके और आपके दोस्त के बीच में एक और बस एक ही बच्चा बैठा है और वो आपका बेस्ट फ्रेंड है जो बैठा है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ना चीटिंग करने में। ये जो बहुत थिन मेम्ब्रेन है ये हेल्प करती है उसका डिफ्यूजन करने में। तो इट हेल्प्स, इट इज़ अनदर फैक्टर ऑफ gaseous exchange। Then we have the molecular, at last we have the molecular weight and solubility of gases। सो जो O2 का मोलिकुलर वेट होता है वो CO2 के वेट से कम होता है, राइट। CO2 में तो O2 का तो वेट होता ही होता है, उसके साथ साथ कार्बन का भी वेट होता है। तो जो मोलिकुलर वेट ऑफ O2 होता है, मोलिकुलर वेट ऑफ O2 होता है, वो कितना होता है, 16 + 16 32 ग्राम्स। और जो मोलिकुलर वेट ऑफ CO2 होता है वो कितना होता है, 32 + 12 44 ग्राम्स। जो O2 होता है उसका मोलिकुलर वेट CO2 के मोलिकुलर वेट से काफ़ी कम होता है। जो सॉल्युबिलिटी होती है CO2 की, वो पता है कितनी होती है, जो CO2 की सॉल्युबिलिटी होती है ये तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, राइट, थोड़ा सा, डबल भी नहीं, 1.5 टाइम्स भी नहीं, है ना। जबकि ये है जो हमारा CO2 की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो O2 की 24 टाइम्स होती है। जस्ट थिंक, 24 टाइम्स ऑफ O2, इतनी सॉल्युबिलिटी होती है CO2 की। जबकि जो हमारा है, इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम एक साथ लेके देखें, टेकिंग बोथ दिस पॉइंट्स इन अकाउंट, सो वी फाइंड दैट नेट आउटवर्ड ऑफ CO2 डिफ्यूजन इज 20 नेट outward of CO2 diffusion is 20 times more than net inward of O2 diffusion is 20 times more than, ये YouTube वाला टाइम से 20x more than। भाई हम यूट्यूबर्स को तो यूट्यूब लैंग्वेज आती है ना, आपको भी सिखा दूँगी, टेंशन मत लो। आप यूट्यूब तो आप भी बहुत देखते हैं, तो आपको भी ये लैंग्वेज तो बहुत अच्छे से आती है। ये 2x नहीं, ये 20x है। सो द नेक्स्ट आउटवर्ड ऑफ CO2 डिफ्यूजन इज 20 टाइम्स मोर देन द नेट इनवर्ड ऑफ O2 डिफ्यूजन, है ना। सो दिस इज द 4 फैक्टर्स। इन सभी फैक्टर्स को अकाउंट में रखते हुए हमने पता लगा लिया है कि कौन कितना अंदर जाएगा, कितना बाहर जाएगा। 4 फैक्टर्स थे, चारों को ध्यान में रखा। वैसे तो 5 थे, लेकिन सॉल्युबिलिटी और मॉलिक्यूलर वेट एक में ले लिया। तो हमने देखा कि जो नेट आउटवर्ड ऑफ CO2 डिफ्यूजन है वो O2 डिफ्यूजन के नेट इनवर्ड से 20 गुना ज़्यादा है। कितने गुना ज़्यादा है, 20 गुना। जरा सोचो कितना होता होगा 20 गुना, 1 2 3 5 10 15 20 गुना ज़्यादा है। तो अब हम आते हैं ऑक्सीजन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व पर।
तो गाइज ये देखो, ये है हमारा ऑक्सीजन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व। ये देखो, इसका थोड़ा सा बाहर का बैकग्राउंड आ रहा है, बट नेवर माइंड, ये आपको पूरा एक साथ दिखाना पड़ता है, और पूरा एक साथ दिखाने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड तो आएगा। ये सेट करना नहीं आता मुझे, नेवर माइंड, थोड़ा सा बैकग्राउंड आ रहा है बस। तो ये इधर है हमारा ऑक्सीजन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व। ये जो रेड में दिख रही है, ये जो ब्राउनिश ब्राउनिश दिख रही है, ये जो मेन लाइनिंग है, इससे इधर शिफ्ट करेगा। ये जो ब्लैक वाला है ये है लेफ्ट शिफ्ट, जो इधर शिफ्ट करेगा ग्रीन वाला है ये है राइट शिफ्ट। तो ये जो है हमारा ब्राउन वाला, ये है एक सिग्मोइड कर्व, और ये दिखाता है, डिपिक्ट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन आर्टरी। जो इधर वाला है, ये वाला है, ये दिखाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन सिस्टेमिक वेन्स। तो इसको याद करने के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है, कैडेट इज राइट, मतलब कैडेट इज स्टैंडिंग इट राइट, इट मीन्स हैव यू एवर बीन एन एनसीसी कैडेट, और हैव यू एवर हर्ड अबाउट वन? सुना तो होगा भाई, सुनना तो किसने नहीं होगा यार, सुना तो सबने होगा, है ना। तो जो कैडेट है वो राइट है, ये कह रहा है यहाँ पे। तो कैडेट में जो सी है वो CO2 है। कैडेट बताएगी कि क्या क्या हमारा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजन डिसोसिएशन एसोसिएशन कर्व में क्या इंक्रीज होगा तो किधर शिफ्ट होगा, क्या डिक्रीज होगा तो किधर शिफ्ट होगा। तो ये हमारा CO2, C4 कैडेट, C4 CO2, A4 एसिडिटी, A4 एप्पल, D4 DPG, E4 एक्सरसाइज, T4 टेम्परेचर, और इज राइट। ये मैंने कहा कि कैडेट सही है, पर इधर ये जो इसमें जो राइट का जो मीनिंग छिपाया है ये है कि राइट शिफ्ट। अगर ये सब बढ़ गए, CO2 एसिडिटी, DPG एक्सरसाइज, टेम्परेचर, अगर ये सब बढ़ गए तो जो कैडेट है वो राइट में शिफ्ट कर जाएगी, पर अगर घटे तो लेफ्ट में। ऐसा कोई रूल नहीं होता है, पर हमने बना दिया। अपनी पढ़ाई अपने रूल्स, राइट, अपना चैनल अपनी पढ़ाई अपने रूल्स, अपना याद करने का तरीका, अपने निमोनिक्स। तो जो निमोनिक है इसमें ये कह रहा है कि अगर CO2 एसिडिटी, DPG एक्सरसाइज, टेम्परेचर, अब भाई साहब ये एक्सरसाइज DPG क्या बक रहे हो बहन जी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। टेंशन मत लो भैया, ये बस एक बार निमोनिक पूरा हो जाने दो, जो नेक्स्ट पेज शिफ्ट होगा उसमें पूरा सब कुछ समझाऊंगी, ये क्या कैसे अफेक्ट करते हैं सब कुछ। तो अगर ये सब बढ़ जाएंगे तो कैडेट राइट शिफ्ट हो जाएगी, मतलब अगर कैडेट के मार्क्स बढ़े तो कैडेट राइट में शिफ्ट हो गई, राइट। अगर कैडेट के मार्क्स घटे, कैडेट के नंबर घटे, कैडेट की मार्किंग्स घटी तो लेफ्ट में शिफ्ट होना पड़ेगा उसे। अब लेफ्ट में पता है क्या है, कांटेदार झाड़ियाँ, तो उसे लेफ्ट में शिफ्ट होना पड़ेगा। राइट में है सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फ्लावर्स, तो राइट में शिफ्ट हो जाएगी वो अगर बढ़ेगी तो, और अगर वो घटेगी तो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी। ये सब याद रखना है, इसमें कोई ढील नहीं है। ये PYQ में 1 2 3 4 5 और इसमें से सीधे 10 क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये जो हमारा ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 में से अगर एक भी आ गया और आप लोगों ने गलती से गलत कर दिया, मैं ये नहीं कह रही गलत कर दिया, मैं कह रही हूँ गलती से गलत कर दिया, तो आपके कितने नंबर गए? 5। तो इस पर ध्यान से, और मान लो ऐसा होता नहीं है, वैसे अगर 20 क्वेश्चन आ गए, एक ही डायग्राम से 20 क्वेश्चन आएंगे तो नहीं, पर अलग अलग एग्जाम्स में 20 क्वेश्चन आ गए और 20 लोगों ने 20 क्वेश्चन गलत कर दिए, कितने नंबर कटेंगे पता है? 100। कितने कटेंगे? 100। तो ये जो निमोनिक है इसे रट लो, अच्छे से रट लो। तो ये जो राइट है ये भी कह रहा है कि मुझे रट लो। निमोनिक कह रहा है कैडेट, ये जो हमारी कैडेट है ना ये बड़ी अच्छी है, हमको सब कुछ एक साथ समझा रही है। इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा तो क्या होगा, इसे रट लो, ये भी साथ में बता रही है। किसका क्या मीनिंग है ये मैं बताऊंगी अभी। अनदर कैडेट, आई ऑल्सो बीन एन एनसीसी कैडेट बाय द वे। तो ये जो दूसरी कैडेट है, जो ये कैडेट है, इससे जो दूसरी कैडेट है जो आपको पढ़ा रही है वो आपको बताएगी कि क्या बढ़ेगा, किसका क्या मतलब है, सब समझाएगी, डोंट वरी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं किसका क्या मीनिंग है इससे लेकर। तो गाइस यहीं से देखते हैं किस किस को क्या क्या अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले है हमारा CO2। तो CO2 जब कर्व राइट में शिफ्ट होता है तो इसलिए होता है क्योंकि जो O2 होती है वो रैपिडली अनलोड होती है।
जब O2 रैपिडली अनलोड होती है तो CO2 का जो CO2 की मात्रा है, जो CO2 का अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, राइट। जब CO2 का अमाउंट बढ़ जाएगा तो जो परसेंट सेचुरेशन है Hb का O2 से वो इन्फ्लुएंस होगा, घटेगा सच में। तो जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब O2 का अमाउंट डिटैच होगा, जब डिसोशिएट होगा O2 डिसोशिएट होगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का अमाउंट घटेगा। और जैसे जैसे O2 डिटैच होगा CO2 कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की बढ़ेगी। तो इस हिसाब से जब CO2 कैपेसिटी बढ़ेगी तो वही बात है, O2 कम होगा, O2 कम होगा तो वो राइट में शिफ्ट होगा। ऐसे ही ये जो इफेक्ट है, ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन CO2 एंड O2, बिटवीन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन, देखो बताया था ना, अब तक यही गलती होती है बार बार। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं होता, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन होते हैं। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन और जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होते हैं, इसकी जो रिलेशनशिप होती है इसे बोलते हैं हाल्डेन इफेक्ट। वो रामानुजन हाल्डेन नंबर वाला हाल्डेन इफेक्ट नहीं, ये दूसरा हाल्डेन इफेक्ट है। कोई दूसरा हाल्डेन था, उसने इफेक्ट खोजा था, उसके नाम पर इसे हाल्डेन इफेक्ट का नाम दे दिया गया। अब दूसरा एसिडिटी। एसिडिटी बोले तो पीएच, कम पीएच होता है तो एसिडिटी ज़्यादा होती है। एसिडिटी जब जो पीएच होता है वो H+ आयन से भी कहीं कहीं एसोसिएटेड होता है। हमने वहाँ पढ़ा था ना RBC वाले डायग्राम में। तो वो H2O और H2CO3 से कंबाइन होते हैं। जो H+ आयन जितने बनेंगे पीएच उतना कम होगा, जितना पीएच कम होगा उतना एसिडिटी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो हीमोग्लोबिन है वो एक बफर की तरह एक्ट करता है। ये एक पीएच को मेंटेन करके रखता है। हाइड्रोजन आयन को ग्लोबिन चेन के साथ बाइंड करके, कंबाइन करके जब पीएच डिक्रीज होगा तो Hb की जो एफिनिटी है O2 के लिए वो भी डिक्रीज होगी, जिससे कि O2 का अनलोडिंग कॉज होगा। और टिश्यू लेवल पे जब CO2 ज़्यादा हो जाएगी तो H+ आयन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर लेंगे और O2 के अनलोडिंग का कॉज बन जाएंगे। एल्वियोलाई लेवल पे हायर पार्शियल प्रेशर होता है O2 का, जिससे कि O2 Hb के साथ कंबाइन हो जाते हैं और H+ आयन रिलीज हो जाते हैं, इसलिए HbO2 फॉर्म होते हैं। इसे बोलते हैं बोहर्स इफेक्ट। वही फिर से यार, ये केमिस्ट्री और मैथ्स और फिजिक्स और क्या आते हैं बार बार बायोलॉजी में, लेकिन वही बात है, ये दूसरा बोहर है, ये वो वाला बोहर नहीं है, दूसरा बोहर है। तो दोनों ही कंडीशन में कुछ इस तरह काम करता है बोहर इफेक्ट। लाइक इधर जो है H+ आयन्स ये एक बफर की तरह काम करते हैं। बफर तो समझते होंगे ना, जो पीएच को मेंटेन करते हैं, पीएच की स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं। तो ये ऑक्सीजन के अटैचमेंट और डिटैचमेंट में बार बार हेल्प करता है। H+ आयन्स जो होते हैं, मीन्स एसिडिटी कहीं ना कहीं हेल्प करती है। जब एसिडिटी बढ़ती है तो O2 बाइंड हो जाता है, जब एसिडिटी घटती है तो O2 रिलीज हो जाता है। ये रहा है ऐसे। इधर देखो, ये आके इधर चिपक गए ना तो O2 आके बाइंड हो गया। इधर देखिए, इधर O2 चेन पर आके, ग्लोबिन चेन पर आके बाइंड हुआ तो ये जो H है, H+, ये यहाँ से भाग गई। दैट वॉज ऑल अबाउट दिस। अब आता है हमारा DPG, जिसे हम BPG भी बुलाते हैं। सो DPG की फुल फॉर्म क्या होती है? डाइफॉस्फेट ग्लिसरेट। तो भाई साहब, अब BPG की फुल फॉर्म क्या होती है? DPG जो होता है वो होता है डाइफॉस्फेट ग्लिसरेट, है ना। तो अब ये BPG होता है 1,3 बिसफॉस्फेट ग्लिसरेट। ग्लिसरेट तो ये होता है DPG और BPG, राइट। तो इधर हमारे पास है ये। तो ये जो एक सब्सटेंस होती है, क्या होता है बाय द वे, ये एक सब्सटेंस होती है। वैसे हम करंटली BPG ही देखने को मिलेगा। जो डाइफॉस्फेट है, इससे पहले बोला जाता था डाइफॉस्फेट ग्लिसरेट जो है वो इससे पहले बोला जाता था। अब बोला जाता है इसे बिसफॉस्फेट ग्लिसरेट और 1,3 बिसफॉस्फेट ग्लिसरेट। पर निमोनिक याद करने के लिए आप इसे DPG याद करो, लिखने के लिए इसे BPG याद करो। दो याद करने पड़ेंगे, थोड़ा कष्ट होता है हमारे दिमाग को याद करते हुए, बट डजंट मैटर,
कष्ट करे बगैर तो कुछ होता ही नहीं है, राइट। तो ये जो सब्सटेंस है ये सेल के ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन के दौरान फॉर्म होता है। डीपीजी और बीपीजी है, ये एक सब्सटेंस है जो फॉर्म होती है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन इन सेल। तो इस सब्सटेंस का जो एक्यूमुलेशन होता है सेल में वो इसलिए होता है ताकि ये जो हेमोग्लोबिन स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा चेंज कर देती है बीटा चेन को बाइंड करके। मतलब 2 बीटा चेन्स हैं इसमें हीमोग्लोबिन में, बीटा चेन बीटा चेन बीटा चेन, इसको आपस में बाइंड कर देती है ऐसे। मतलब अगर ये सेल में जमा हो जाए, एक्यूमुलेट हो जाए, तो ये हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर को अल्टर कर देती है, अल्टर HB स्ट्रक्चर थोड़ा सा अल्टर कर देती स्लाइटली बाय बाइंडिंग द बीटा चेन। ये एक बीटा चेन, ये दूसरी बीटा चेन, इनको आपस में बाइंड कर दिया। बीटा चेन को के यहाँ क्या बाइंड होता है, ऑक्सीजन बाइंड होती है, राइट। ये इधर इनको आपस में बाइंड कर देती। तो ये जो होता है मोस्टली हायर एल्टीट्यूड्स पे होता है, मोस्टली हायर एल्टीट्यूड्स पे होता है। जो फीटल हीमोग्लोबिन होती है, फीटल हीमोग्लोबिन, इसके यहाँ पर नेग्लिजिबल एफिनिटी होती है, एफिनिटी नेग्लिजिबल, क्योंकि फीटल हीमोग्लोबिन में नो बीटा चेन, कोई बीटा चेन नहीं होती। अब उसके बाद आता है हमारा एक्सरसाइज और टेम्परेचर। तो जब एक्सरसाइज इंक्रीज होगी तो मेटाबॉलिज्म बॉडी की इंक्रीज होगी। एक्सरसाइज करते तब पसीना निकलता है, हमारी लिम्स, हमारी बॉडी ज़्यादा काम करती है, हमारी मसल्स को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हमारी बोन्स को हिलना डुलना पड़ता है, बहुत कुछ होता है। फिर इससे जो CO2 और हीट प्रोडक्शन होती है वो भी ज़्यादा होगी। और क्योंकि हीट मेटाबॉलिक रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसे कूल डाउन होने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, बॉडी को और फंक्शनिंग करनी पड़ेगी। अब उसके लिए हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होगी। तो ये है टोटल एक्सरसाइज और टेम्परेचर का रोल इसमें। अब उसके बाद आता है हमारा रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग के रेगुलेशन में ये सब काम आता है। लाइक ये पॉन्स तो काम नहीं आता, सेरिबेलम भी काम नहीं आता, ये ब्रेन है। ये बस ब्रेन दिखाने के लिए, क्योंकि फ्लैट ज़्यादा लग रहा है, ब्रेन कम लग रहा है, इसलिए मैंने इधर पॉन्स और सेरिबेलम मेंशन किए हैं। तो ये जो 2 डॉट्स दिख रहे हैं, ये पहला है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप DRG और जो दूसरा है वो है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप VRG। ये दोनों मेडुला के पार्ट होते हैं। तो जो DRG होता है ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से जुड़ा होता है, जबकि जो ये VRG होता है ये डायफ्राम की मसल से, फ्रेनिक मसल से जुड़ा होता है। अब ये अलग अलग जगह कैसे फंक्शन करते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। तो जो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है ये 2 सेकंड के लिए जो फ्रेनिक मसल्स और इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फोर्स करता है, तो इससे नॉर्मल क्वाइट इनहेलेशन होती है। अब जो फोर्सफुल इनहेलेशन होती है वो कुछ ऐसे होती है। जो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है 2 सेकंड के लिए जो फ्रेनिक मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की कॉन्ट्रैक्शन को कॉज करते हैं, जबकि जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है ये स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड, स्कैलन और पेक्टोरलिस माइनर मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो इससे टोटल फोर्सफुल इनहेलेशन होती है। उसके बाद आती है हमारी फोर्सफुल एक्सेलेशन। लेकिन फोर्सफुल एक्सेलेशन से पहले मैं आपको नॉर्मल क्वाइट एक्सेलेशन बता देती हूँ। तो जो DRG जो हमारा होता है वो हमारी फ्रेनिक मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण कि हमारा जो होता है एक्सेलेशन हो जाता है, नॉर्मल क्वाइट एक्सेलेशन। अब जो हमारा VRG होता है वो कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स में। जो हमारा फोर्सफुल एक्सेलेशन होता है इसमें बेसिकली ये सब मसल्स जो लिखी हैं हमने यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सभी काम करती हैं। तो इन सब में कॉन्ट्रैक्शन होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स में, इंटरनल ऑब्लिक में, एक्सटर्नल ऑब्लिक में, रेक्टस एब्डोमिनस में और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल्स। इन सब में जो कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड होती है तब जाकर होती है हमारी फोर्सफुल एक्सेलेशन।
अब ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं ना, ये कोई सीधा साधा डायग्राम नहीं है, ये हमारा पूरा बॉडी की जो कैरोटिड बॉडीज़ हैं, एओर्टिड बॉडीज़ हैं, मीन्स रिसेप्टरी सिस्टम का डायग्राम है। तो ये हमारा हार्ट है, इधर ये हमारा एक एओर्टा जा रही है। आइडियल कंडीशंस में एओर्टा का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 95 और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है 40 mmHg। अब इसमें एओर्टा में 2 एओर्टिक बॉडीज़ होती हैं। अब जो एओर्टिक बॉडीज़ होती हैं हमारी, ये इधर रिप्रेजेंट होती हैं, इसमें ये कनेक्टेड होती है हमारी इधर जो हमारा ब्रेन का जो पोन्स पार्ट है, मेडुला पार्ट है, यहाँ से। और ये जो हमारी दोनों हैं, ये तो है हमारी वेगस नर्व, इसके थ्रू कनेक्टेड होती है, और ये वेगस नर्व के थ्रू कनेक्टेड होती हैं एओर्टिक बॉडीज़, नर्व नंबर 10। और फिर हमारे कैरोटिड आर्टरीज में जो कैरोटिड बॉडीज़ होती हैं वो हमारी प्रेजेंट होती हैं, वो हमारी कनेक्टेड होती हैं ग्लोसोफेरेंजियल नर्व से, नर्व नंबर 9। ये ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। इसमें ब्रेन में एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, एपन्यूस्टिक सेंटर होता है। ये 2 होते हैं PRG, स्पॉन्टाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप्स, ये हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। तो जो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अगर उसमें स्लाइटेस्ट भी चेंज आता है तो ये उसे डिटेक्ट कर लेती हैं, इसके पास ब्रेन के पास सिग्नल भेजती है और ब्रेन हमारा उस अकॉर्डिंगली फंक्शन करता है। वो हमारे लंग्स की तरफ, लंग्स के यहाँ सिग्नल भेजता है, DRG VRG को सिग्नल भेजता है, और उसके बाद जो रेमेडियल एक्शंस ले लिए जाते हैं। तो अगर कोई खॉट होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है या फिर ये सब होता है, तो ये जो हमारा स्पॉन्टाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप है ये तभी की तभी उनको सूचित कर देता है। इसलिए क्योंकि अगर हम कई बार सुना होगा कि हम अपनी नाक खींच के सुसाइड नहीं कर सकते, एक मुहावरा है, मुझे इतनी हिंदी तो नहीं आती है बट मैं बायलैंग्वेज में बता सकती हूँ कि हम अपनी नाक भींच के सुसाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब पता है क्या होता है कि अगर हम अपनी नाक को भींच के रखेंगे तो उससे हम सुसाइड कर नहीं पाएंगे। हम अपनी नाक को भींच के रखे हुए हैं, तभी की तभी क्या होता है बेसिकली कि हम कुछ देर बाद बेहोश हो जाते हैं। बेहोश हो जाते हैं तो हमारे नाक के ऊपर से हमारा हाथ हट जाता है, नाक के ऊपर से हमारा हाथ हट जाता है तो फिर से हमारा नाक खुल जाता है, फिर से हमें सांस आने लग जाती है। तो हम नाक भींच के सुसाइड कर नहीं सकते। पहले तो हम लोग सोचते थे कि अगर हम नाक भींचते हैं तो हमारा ब्रेन होता है वो हमारी मुंह को सिग्नल देगा और हमारा मुंह खुल जाएगा और हम सांस ले लेंगे, पर ऐसा नहीं होता है भाई। ब्रेन को हम खुद सिग्नल दे रहे हैं हमें सुसाइड करना है, तो कैसे हो सकता है? ये ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी जो हमारी जो नाक से हाथ हट जाता है जब हम बेहोश हो जाते हैं उसके बाद, तो इस कारण हम नाक बंद करके सुसाइड कभी नहीं कर सकते। तो ये स्पॉन्टाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप की फंक्शनिंग है। तो अब आते हैं हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पर। रेस्पिरेशन हुआ पूरा। अब जो रेस्पिरेशन में जो भी कमी होती है, कमी के कारण जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जो बीमारियां होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे COPD। COPD इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। क्रॉनिक का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब होता है जो कोई रुकावट हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो। पल्मोनरी इज द वन रिलेटेड टू द लंग्स। और डिसऑर्डर क्या होता है? डिसऑर्डर होता है बीमारी, कोई भी डिसफंक्शनिंग। तो ये है हमारा क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। इसमें आते हैं 2, एक एम्फीज़िमा आता है, एक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आता है। अच्छा, ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, कभी पड़ोस वाले दादाजी को कहते हुए सुना है, भाई मुझे ना दमा है, मुझे सांस लेने में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो पाइप लगाना पड़ता है और फिर जाकर मुझे सांस आता है। अब तुम लोग सोच रहे होगे यार ये दमा क्या होता है भला, हमने तो आज तक देखा नहीं। कभी किसी को हाँफते हुए देखते हो, लगता है यार उसमें भूत आ गया क्या, वो इतना हाँफ क्यों रहा है? अरे बेचारे को अस्थमा है। देखो तुम कभी किसी को सुना है 2 घंटे से खांसे जा रहा है, यार ये क्या इंसान है, इसके TB हो गई क्या? या फिर मम्मी को कभी कहते सुना है, बेटा खांसी की दवाई ले ले, अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी रहेगी ना TB हो जाएगी। अब तुम सोचते हो भाई ये TB क्या बला है, हमें परेशान करती, इतनी कड़वी खांसी की दवा पिलाती है। तो ये TB बहुत डेंजरस चीज़ है, तो खांसी की दवा ले लिया करो, नहीं तो TB हो जाएगी, ये सच है। अब किसी को ये भी कहते हुए सुना होगा कि भाई जो पड़ोस वाली आंटी है ना, उनके फेफड़ों में कैंसर है। अब तुम सोचोगे हाँ कैंसर तो गले में होता है, फेफड़े में कब से होने लगा?
भाई फेफड़े में भी होता है और बहुत खतरनाक वाला होता है। या फिर कभी किसी पान तंबाकू खाने वाले को देखा है तो लोगों को कहते हुए भाई रे तेरे ना फेफड़ों में कैंसर हो जाएगा, ये पान तंबाकू मत खाया करो। तुम सोचते हो कि यार एक खाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक से जाता है, ये तो लोग पागल हैं, हम तो साइंस के स्टूडेंट्स हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक से जाते हैं, ये हमारे लंग्स में कैंसर कैसे कर सकता है? भाई कर सकता है, धीरे धीरे, रुको 1 मिनट अभी बताती हूँ। तो जो एम्फीज़िमा होता है सबसे पहले, ये तो 3 तो हमारे नॉर्मल हैं, और ये तो जो माइन वाले इलाकों में रहते हैं उन लोगों ने तो देखा होगा, या फिर कोई हाईली पोल्यूटेड, जैसे मेरी दिल्ली है, इधर हाईली पोल्यूटेड यहाँ पे लोग रहते हैं, इन्होंने भी देखा होगा कई बार, जैसे हाईली पोल्यूटेड एरियाज़ में रहते हैं, भट्टी वगैरह पे काम करते हैं ये सब लोग, तो उनको एक अजीब सी सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है धीरे धीरे। तो डॉक्टर कहते हैं भाई तुम ना अपना काम छोड़ दो, नहीं तो बहुत बहुत डेटेरियोरेट हो जाएगी तुम्हारी सिचुएशन, तुम्हारा जो ये तुम्हें ना ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, कल को तुम्हें भी डॉक्टर बनना है। और ये सब बातें अपने पेशेंट को कहनी भी, तो पहले ही सीख लो ये चीज़ होती क्या है। तो सबसे पहले हमारी सीओपीडी में सबसे पहले जो आता है वो है हमारा एम्फीज़ेमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर का लिटरल मीनिंग मैंने आपको समझा दिया था। तो जो एम्फीज़ेमा है वो एल्वियोलर वॉल जो होते हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, इस कारण होते हैं। और गैस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया कम हो जाते हैं। जब गैस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया अगर कम हो जाए तो क्या होता है पता है ना, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, वो 4 फैक्टर्स थे, उसमें दूसरा फैक्टर क्या था, सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो अगर सरफेस एरिया कम हो जाए तो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है। जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है तो जो एरिया मतलब इनहेल तो हम अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो लंग्स हैं, एल्वियोलाई है, उससे बाहर तो जा ही नहीं सकता कोई, एयर पार्टिकल बहुत कम जा सकते हैं। तो हमारी जो एल्वियोलाई है वो फूलने लग जाती है, वो बैरल शेप्ड हो जाती है। बैरल देखिए कुछ ऐसी हो जाती है हमारी एल्वियोलाई, मोटू है ना। तो ये होता है एम्फीज़ेमा। ये किन लोगों में होता है, जो अल्फा एंटीट्रिप्सिन होते हैं ना, उनमें उनकी कमी जिसमें होती है वो उन्हें होता है एम्फीज़ेमा। हमारी जो लंग एल्वियोलाई होती है उसमें कुछ मज़े से घूमते हुए पार्टिकल्स होते हैं, एक प्रोटीएस और एक इलास्ट्रेस। जो एंटी प्रोटीएस होता है, जो कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स होते हैं, इलास्ट्रेस उन्हें एंटी प्रोटीएस में कन्वर्ट करता है। अब जो अल्फा एंटीट्रिप्सिन है वो हेल्प करती है इस इलास्ट्रिन का कत्ल करने में। इलास्टिन प्रोटीन को ख़त्म कर देता है, कोलेजन प्रोटीन को ख़त्म कर देता है। अब इसका कत्ल तो करना पड़ेगा, जो इतना बड़ा निकम्मा इंसान है उसका कत्ल तो ज़रूरी है ना। तो इस कारण नॉर्मल कंडीशन में तो ये कर लेता है, लेकिन जब एम्फिज़ेमल कंडीशन होती है तो जो ये हमारा इलास्ट्रेस होता है, दुष्ट प्राणी अधिक हो जाते हैं, और जो अल्फा एंटीट्रिप्सिन जो अच्छे लोग होते हैं हमारी बॉडी में वो हो जाते हैं कम। कलयुग वाली सिचुएशन होती है। तो ये होता है एम्फीज़ेमा।